The Dramatic Society of Bhagini Nivedita College has performed very well on various occasions. Last year, a Beast presented tremendous stage plays on the theme Unity and Integrity of India and Swachh Bharat Abhiyan on the occasion of the birth anniversary of Mahatma Gandhi, an international seminar conducted by the Department of Environmental Science 7 November 2019. It is also beautiful. It also beautifully performed on Children's Day celebration 14th November 2019 and, तू जरा हिम्मत and received lots of love and appreciation. Likewise, Culture Fest of Bhagini Nivedita College did not remain untouched from the performance of A Beast. Its members are also active outside the college. Its two members, Lipsha Pathi and Urvashi, participated with great enthusiasm and sincerity in the 6-day intense theatre workshop conducted by UDAN in collaboration with National School of Drama from 26th to 31st December 2019. Now, I would like to call the respective students Archana, Lipsha, Shrestha, Sakshi, Namita, Urvashi, Janvi, Riya, Deepriya, and Simran Arora. They will present a play in front of you. तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। जिंदगी कभी कभार हमें ऐसे मोड़ पे ले आती है जहाँ जीने की चाह को खत्म कर मौत को गले लगाने का मन करता है। आज ऐसी ही एक लड़की की कहानी मैं आप सबके सामने बयां करने जा रही हूँ, जिसका नाम है खुशी। अपने नाम की ही तरह खुश मिजाज, जिंदा दिली और आजाद ख्यालों के साथ अपने सपनों को पूरा करने का ख्वाब उसने भी देखा है, पर आज वो भी जिंदगी के इस मोड़ पर आ खड़ी है। आइए देखें क्यों। दिन ब दिन बदतमीज होती जा रही है। ना लाज है, ना शर्म। कपड़े तो देखो, छी छी छी। मुझे तो इसके लक्षण भी ठीक नहीं लगते हैं। मैं तो कहती हूँ इसकी शादी करवा दो, जितना जल्दी हो सके। कम से कम घर की इज्जत तो बनी रहेगी। How can anyone so be dumb यार? हो क्या जाता है तुझे क्लास में? अगर कुछ नहीं आता है तो मत बोला कर। ये अपनी बेइज्जती करवाने की आदत हो चुकी है तुझे। और हाँ, अब से ना मेरे फ्रेंड्स वगैरह नहीं रह सकते। तुझे होगी अपनी बेइज्जती करवाने की आदत। मुझे मेरी इज्जत बहुत प्यारी है। यार तू ऐसी कैसी है यार? मतलब कोई इतना अगली कैसे हो सकता है? मुझे तो डाउट होता है कि तू पक्का मेरी बहन है ना, क्योंकि खुशी तू खुद देख, मैं कहाँ तू कहाँ, और पढ़ाई में भी आशीष भैया को देख, हमेशा टॉप करते हैं और तू पास ही हो जाए। खुशी, प्लीज रुको, प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो। क्या हुआ है बताओ, क्या हुआ है बताओ, प्लीज मेरी बात सुनो। तुम मुझे बता सकती हो, तुम मुझे बता सकती हो, ओके प्लीज।
प्लीज। मैं भी इसी जगह खड़ी थी। जब मैं 5 साल की थी, मेरी माँ डेथ कर गई थी। मेरे बाबा और मेरे रिलेटिव्स वो मुझे सड़क पे छोड़ दिए। लोग कहते हैं कि कूड़ेदान के पास से उठा के मुझे किसी ने अनाथ आश्रम पहुंचा दिया। वहां से लोग मुझे अडॉप्ट करते, फिर अनाथ आश्रम छोड़ जाते, अडॉप्ट करते, फिर अनाथ आश्रम छोड़ जाते। फिर एक दिन एक नए माँ बाप ने मुझे अडॉप्ट किया। वो मुझसे बहुत काम लेते थे और मुझे बहुत पीटते थे, बहुत। मुझे बहुत दर्द होता था। इतना दर्द होता था कि मैंने भी यही डिसाइड किया जो आज तुम करने जा रही हो। मैं 7 साल की थी। शायद आज मैं मर जाऊं तो मुझे उतना हर्ट नहीं होगा, उतना फील नहीं होगा जितना कि उस 5-7 साल की बच्ची। क्या तुम्हें याद है जब तुम 7 साल की थी तुम कैसे रहती थी? नहीं ना, पर मुझे सब याद है। एक बुरे सपने की तरह रोज वो मेरे आंखों के सामने आता है, जैसे कि कल की बात हो। वो सर्दियों का दिन, मुझे इतना मारा गया था कि मेरी 3 हड्डियां टूट गई थी। बहुत दर्द में थी मैं, कोई नहीं था मेरे पास। बस वक्त गुजर ही जाता है। मैं सहन कर ली। क्यों? सब ठीक हो गया। फिर ये जो वक्त है ना, ये भी गुजर जाएगा, फिर सब अच्छा हो जाएगा। सब, ट्रस्ट मी, ये सब ठीक हो जाएगा। मेरा यकीन करो, सब ठीक हो जाएगा। तो देखा, हर मसले का हल खुदकुशी नहीं है। जिंदगी में बहुत सी परेशानियां आती हैं, पर कहते हैं ना, नथिंग लास्ट फॉरएवर। कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। वैसे ही प्रॉब्लम्स भी टेम्परेरी होती हैं। और फिर सोना तो आग में तब पर ही निखरता है। हीरे को अपनी चमक जमीन में गड़े रहने पर ही हासिल होती है। तो बस मन में भगवान के लिए विश्वास कभी खत्म न होने दें और आत्मविश्वास से परिपूर्ण होकर आगे बढ़ें। कदम बढ़ाएं अपनी मंजिल की ओर।
जी तोड़ मेहनत करें और फिर देखें कि आपको अपने मुकाम तक पहुंचने से कोई नहीं रोक। तो अब कुछ चंद पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात को यहीं विराम देना चाहूंगी। ए परिंदे यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल क्योंकि जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। लहरों की तो फितरत ही होती है शोर मचाने की, लहरों की तो फितरत ही होती है शोर मचाने की, पर मंजिल उसी की होती है जो तूफान देखता है। Thanks a lot to all of you for this outstanding and amazing play. And I must say that you all have portrayed the topic suicide awareness very well. Now, I would like to invite Lavanya Savane, second year student of BA program, Bhagini Nivedita College, University of Delhi, to say the prayers and invoke the Almighty. इतनी शक्ति हमें न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, दामन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। Thank you so much, Lavanya, for this beautiful prayer. Now, I would like to call Printy to announce the results of poem recitation competition and slogan writing competition. A very good morning to one and all present here. Now, I would like to announce the results for the poem recitation competition that was judged by
Dr. Tanvi, Assistant Professor, Department of Music in Bhagni Nivedita College, University of Delhi, and Ms. Ruchi, Assistant Professor, Department of Mathematics, Bhagni Nivedita College, University of Delhi. The first prize goes to Shakshi. The second prize goes to Ritika. And the third prize goes to Navya. Moving forward, I would like to announce the results of the slogan writing competition, which was judged by Dr. Tanvi, Assistant Professor, Department of Music in Bhagni Nivedita College and University of Delhi, and Ms. Ruchi, Assistant Professor, Department of Mathematics in Bhagni Nivedita College, University of Delhi. The first prize for the slogan writing competition goes to M. Siddhan Kadri, Bharatadishan University, Tiruchirappalli, Tamil Nadu. The second prize goes to Priyati, BCom second year, Bhagni Nivedita College, University of Delhi. And the third prize goes to Anurag Gupta, Delhi University. Congratulations to all the winners. Thank you. Thank you so much, Printy. And now I would like to invite Tamanna to announce the results of the short article writing competition. Thank you, Jigyasa. Good afternoon to one and all. Myself, Tamanna from Research Cell. Now I would like to announce the result of the short article writing competition judged by Dr. Shavi Mishra, Assistant Professor, Maitri College from the University of Delhi. And our first prize goes to Sakshi Singh and Tanya Verma. Second prize goes to Prapti Gandhi. And the third prize goes to Nana Prajapati. I would congrats to all and better future. Jigyasa, over to you. Thanks a lot to all of you for announcing the results. And now I would like to say that at the end of your struggles, challenges, and obstacles come the mental strength to cross many boundaries in the future. I extend my heartfelt thanks to all our beautiful and great guests for gracing your important work and sharing with us your opinions today. Thank you for such motivational and inspiring words. The guidelines and discussions held here can surely be a roadmap to success for many of us. We can really acknowledge you for giving us time and efforts that we really made this webinar as one of the finest and memorable conversations of our life. And also thank you audience for making our event successful and for your patience. Thank you so much, audience. Now we are sharing the link for National E-Quiz and the feedback form in the... Yes, sir. Sorry to interrupt you. Yes, I sir. would like to thank our speakers for the day, Yes. Dr. Abhishek, Advocate Saurav Sanjeev, and Dr. Akash. Thank you so much for your time, for your precious time and precious knowledge you have shared with us. I hope the Happy Mentors Club will be doing such more events in the future. I would also like to thank my team, including Charu, Jigyasa, Tamanna, Nandini, Aarti, uh, Pinky, uh, Komal, Tiwari, Ruchita, Prachi. Sorry if I have any name because मैंने तुमसे मांगा था तुमने लिख नहीं दी को. So the entire research cell team, the NSS teams and dramatics teams to make it a success. And special thanks to dramatics. I had tears in my eyes when I saw that video. So it was a very good performance, I would say indeed. And every event is, I mean, not possible without participants. So I would like to thank participants. I would like to also apologize officially here since we can't accommodate more than 100 participants and we had 403 registrations. So I officially apologize for the same and we'll be sending the recording to all of the participants who have registered with us. Up to Charu, and thank you so much for handling this event so beautifully. Thank you, Charu and Jigyasa. Thank you so much, sir. Now we are sharing the link for National E-Quiz and the feedback form in the chat box. And we request you all to fill the feedback form positively. Then only we will be able to provide you the e-certificates. And I request you all to keep patience because it would be taking almost 1 week to prepare this digitally verified certificates as we have a huge number of registration. Thank you so much. The link will be available in the chat box. The students who are participating in the e-quiz can complete the e-quiz. We will be starting at 1:30 and you
Before the quiz, you can fill the feedback form so that we can send you the e-certificates as well. Thank you so much. In case of any query, In case of any queries, you can write to us, but just don't write to the certificates. We always try hard to do at one time, so don't write mail before a week if you don't get it. So it will take time. Yes, Sorry for please the keep a inconvenience caused. yes, please keep the patience of 1 week because these are digitally verified certificates, so it takes time. But we will surely send you the certificates. Please share the have you the link Now, in the please resend the feedback link. Yes, yes, we are sharing it. yeah. So feedback is self-study mental health. Please, your cooperation is required. So please share the feedback. Jigyasa, please share the link again in chat box. And Okay, we will sir. be also sending a thanks mail with the feedback link and the recording shortly to every participant in case you missed it. So thank you so much for being here and being with us throughout the program. Thank you for your patience. Now feedback link is in the chat box, so you all can just see your name in chat box and use the feedback link fill the form. So feedback link is there in the I request our expert speaker to fill this short survey. Thank you so much from the research cell, MSS, and the entire team of Dramatics as well, and from our small family of Bhagini Nivedita College and Mentors Club. In case you all want anyone wants to hold such event for your college, you can do the collaboration with Bhagini College or with the Happy Mental Club. You can write a mail to the research cell or to my personal ID, Chaudhary@gmail.com. So that is all for today. Signing out as a result from the event. You can enjoy your day, be safe, and be happy in life. And please fill out the feedback form. Thank you so much.